पुढच्या निवडणुकीमध्ये निवडणूक लढवणे किंवा जिंकणे यामध्ये देखील येणाऱ्या अडचणी हे सगळं लक्षात घेऊ आणि कुणाला काहीतरी पाहिजे, कुणाला काही मंत्रीपद पाहिजे किंबहुना आणखी काही वैयक्तिक स्वार्थ असा कुठलाही मनामध्ये न ठेवता आतापर्यंतच्या महाराष्ट्रातल्या घटना आपण जर पाहिल्या तर अपोजिशनकडून आपण रुलिंगकडे जात असतो, परंतु हे जे काही घटना आहे ते रुलिंगकडून अपोजिशनकडे जाण्याचा एक प्रकारचा तसं बघितलं तर तशी घटना आहे. कारण मी देखील मंत्री होतो, नगरविकास मंत्री, आणखी माझ्यासोबत देखील अन्य मंत्री या मंत्रिमंडळामध्ये काम करत होते. परंतु राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने, भविष्याच्या दृष्टीने जे काही घडत होतं, काही मंत्रिमंडळातले सहकारी त्यांच्यावर ज्या काही झालेल्या कारवाया असतील, आणखी अनेक इश्यू होते. महाविकास आघाडीमुळे ते निर्णय घेता येत नव्हते. आता काही आम्ही जेव्हा एक बाळासाहेबांची वैचारिक भूमिका घेऊन पुढे गेलो हिंदुत्वाची, त्यास काही निर्णय झालेले आहेत, त्याचं स्वागतच आम्ही केलेलं आहे. परंतु हे सगळे पूर्वीच आपण करायला पाहिजे होते, परंतु महाविकास आघाडीमुळे काही मर्यादा असू शकतील. पण हे सगळं होत असताना आपल्याला माहित आहे की 50 आमदार म्हणजे 40, 39 आणि बाकी 11, 50 आमदार जेव्हा वेगळी भूमिका घेतात, याचा अर्थ, त्याचं कारण, त्याचं आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता होती. कारण एखादा ग्रामपंचायत सदस्य किंवा नगरसेवक देखील आजच्या काळामध्ये अशा प्रकारचं पाऊल उचलताना आपल्याला दिसत नाही. मग एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर हे 50 लोक एकत्र येतात आणि मला तर काय, मी नगरविकास मंत्री होतो, मला ज्या काही अडचणी होत्या त्या बाजूला राहू द्या, परंतु हे जे आमदार आहेत त्यांच्या मतदारसंघातले जे प्रश्न, इश्यू, समस्या ह्या सगळ्या त्यांनी मला सांगितल्यानंतर आणि त्यांनी मला सांगितलं की आपल्याला आपण 3, 4, 5 वेळा प्रयत्न केला, परंतु दुर्दैवाने त्याच्यामध्ये यश मिळालं नाही आणि म्हणून हा निर्णय घ्यावा लागला. आणि तो निर्णय आम्ही घेतला राज्याच्या हितासाठी, महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या मनामध्ये असलेल्या अपेक्षा, आणि म्हणून आज त्या निर्णयाबरोबर देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी जो निर्णय घेतला, आज भारतीय जनता पक्षाकडे जवळपास 106 आणि इतर अपक्ष जवळपास 120चा आकडा संख्याबळ त्यांच्याकडे आहे. बीजेपी हॅज अबाउट 120. खरं म्हणजे मुख्यमंत्री पद तेही घेऊ शकले असते संख्याबळानुसार, परंतु त्यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवू बाळासाहेबांच्या शिवसैनिकाला या ठिकाणी पाठिंबा दिला, त्याबद्दल मी त्यांना मनापासून मी त्यांनी जे मोठं मन दाखवलं त्याबद्दल मी आदरणीय पंतप्रधान महोदय मोदी साहेब असतील, त्याचबरोबर गृहमंत्री अमितजी शहासाहेब आहेत, देवेंद्रजी आहेत आणि त्यांचे सर्व सहकारी इकडे बसलेले आहेत, त्यांचं मनापासून मी खऱ्या अर्थाने आभार मानतो, त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. ही एक ऐतिहासिक घटना आहे. ते कुणाला तर काहीतरी पद पाहिजे, मंत्रीपद पाहिजे, मुख्यमंत्री पद पाहिजे असं काही मी देखील कुठलीच अपेक्षा केली नव्हती. परंतु जे काय घडलेलं आहे हे वास्तव आपल्या समोर आहे. जी काय अपेक्षा या राज्यातल्या जनतेची आहे ती अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी दिवस रात्र आम्ही सगळेजण मिळून एक करू आणि राज्याला विकासाकडे नेण्याचं काम नक्की केलं जाईल. देवेंद्रजी आमच्या पाठीशी आहेत, पण ते म्हणजे एवढा मोठ्या मनाचा माणूस आपण पाहू शकत नाही, मिळणार नाही. ते मंत्रिमंडळात नसले तरी सुद्धा ते त्यांनी सांगितलंय
की या राज्याच्या विकासासाठी ते आमच्या सगळ्यांच्या सोबत आहेत. हा त्यांचा मनाचा मोठेपणा आणि आजकालच्या राजकारणामध्ये काय मिळेल हे आपण प्रत्येक जण पाहत असतो, परंतु मिळत असताना, घेऊ शकत असताना ते दुसऱ्याला देण्याची जी काही त्या ठिकाणी उदारता दाखवली आहे, अशी उदाहरणं फार आजकालच्या ह्याच्यामध्ये दुर्मिळ आहे. एवढंच मी या प्रसंगी सांगतो. बाकी मी पुन्हा एकदा मनापासून सगळ्यांना धन्यवाद देतो. माझ्याबरोबर जे 39 शिवसेनेचे आणि 11 असे 50 जे आमदार आहेत, ते देखील त्याच्यामध्ये काही मंत्री आहेत आणि आपापल्या मतदार क्षेत्रामध्ये ते देखील ताकदवान आमदार आहेत. असं असताना एकीकडे सत्ता अपक्ष, एकीकडे खूप मोठे मोठे नेते आणि दुसरीकडे एकनाथ शिंदे सारखा एक छोटा कार्यकर्ता, याच्यावर विश्वास ठेवणं आजकालच्या काळामध्ये फार कठीण आहे. परंतु या सर्व 50 आमदारांनी जी लढाई या ठिकाणी लढलेली आहे, जे एक वैचारिक भूमिका घेऊन, बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वाची भूमिका घेऊन, किंबहुना आमचे धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांची जी काही शिकवण आहे आम्हाला, जिथे अन्याय होतो तिथे आवाज उचलणं आणि अन्यायाला वाचा फोडणं, हे करण्याचं काम या 50 आमदारांनी केलेलं आहे. त्यामध्ये माझे काही सहकारी मंत्री आहेत, त्यांना मी खऱ्या अर्थाने मनापासून धन्यवाद देतो. कारण तीच खरी ताकद आज हा इतिहास घडवू शकलेली आहे आणि म्हणून त्यांनी जो माझ्यावर विश्वास दाखवलाय, त्या विश्वासाला कदापि तडा माझ्याकडून जाऊ दिला जाणार नाही आणि जे काही त्यांना यापूर्वी आलेले अनुभव आहेत त्याची पुनरावृत्ती देखील होणार नाही, अशा प्रकारची ग्वाही मी या ठिकाणी देतो. कारण आता जर आपली ताकद वाढलेली आहे, म्हणजे इकडे 120 आणि ते 50, आणखी किती येतील माहित नाही, तर एक मजबूत सरकार या महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल आणि त्याला आदरणीय पंतप्रधान महोदयांचं, आदरणीय गृहमंत्री महोदय जे अमित शहा साहेबांचं, नड्डाजी आपले JP नड्डाजी आहेत अध्यक्ष, या सर्वांचं पाठबळ मिळेल आणि ज्या राज्याबरोबर केंद्र सरकारची ताकद उभी राहते, विकासामध्ये कुठलेही अडथळे त्यामध्ये येणार नाहीत, अशा प्रकारचं एक मजबूत सरकार एक या राज्याला आपल्याला पाहायला मिळेल. हे सरकार लोकांच्या मनामधल्या अपेक्षा आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे आणि राज्याची जी काही प्रगती आहे ती वेगाने करण्यासाठी आम्ही सर्वजण प्रयत्न करू. एवढंच मी या प्रसंगी महाराष्ट्र आज यहाँ पर मैं सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ. देवेंद्र जी फडणवीस साहब यहाँ हैं, उनके सभी सहयोगी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ. शिवसेना के 40 विधायक और इंडिपेंडेंट जो है, ऐसे कुल मिलाकर 50 विधायक जो है वो आज हम लोग सब एक साथ हैं. आप सब लोग जानते हो, पिछले कई दिनों से हम लोग आपसे भी बातचीत कर रहे लगातार. हम लोगों ने हमारे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी की हिंदुत्व की जो भूमिका है, उनके जो विचार है, हमारे धर्मवीर आनंद दिघे साहब ने जो हमें सीख दी है, ये इसको आगे हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. हमें कोई स्वार्थ नहीं है, हमें कुछ पद की लालसा नहीं. मैंने तो पहले जाहिर किया था, मैं ऐसा जो कर रहा हूँ ये मुझे किसी चीज की वो आवश्यकता भी नहीं है. लेकिन जब लोग अभी तक की कई घटनाएं आप लोगों ने देखी है कि अपोजिशन में से रूलिंग की तरफ लोग जाते हैं, लेकिन हम लोग रूलिंग में थे, रूलिंग पार्टी में थे, सत्ता पक्ष में थे. मैं भी नगर विकास मंत्री, मेरे साथ कई मंत्री और कई विधायक जो 50 की संख्या में है, ये सब 50 लोगों ने एक वैचारिक भूमिका लेकर इस राज्य के हित की बात, इस राज्य के विकास की बात और जो उनके चुनाव क्षेत्र में
दिन प्रतिदिन जो समस्याएं खड़ी हो रही है, कल चुनाव में जीतने का जितना मुश्किल हो जाएगा, ये ध्यान में रखते हुए जो महाविकास आघाड़ी सरकार में जो अन्य पक्ष है, मैं किसी के ऊपर आज टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अन्य पक्षों के माध्यम से उनके चुनाव क्षेत्र में जो कठिनाई पैदा हो रही है, उनको जो प्रॉब्लम खड़ी हो रहे और भविष्य में उनका जो मतदाता है, जिन्होंने उनको चुन के दिया है, उनके लिए वो कुछ कर नहीं पाए, तो चुनाव कैसे लड़े, उनको कैसे फेस करे, ऐसी दुविधा में वो सब पड़े थे। और उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग ने बार बार कोशिश की कि इसमें करेक्शन हो जाए। जो हम लोग पहले अलायंस में चुनाव लड़े थे, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, ये नेचुरल अलायंस है, तो नेचुरल अलायंस के खिलाफ होकर हम लोग ये महाविकास आघाड़ी में गए। अब कुछ करेक्शन हो जाए तो ठीक हो जाएगा और दोनों विचारधारा वाली पार्टी जो है इस राज्य का विकास करेगी। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली, दुर्भाग्य से। और इसलिए ये जो कदम उठाया है, ये किसी को मंत्री या किसी, क्योंकि मंत्री हम लोग थे, किसी को कुछ पाने के लिए ऐसा नहीं हुआ। ये निर्णय जो हुआ एक आइडियोलॉजी की बात है, ये बाला साहब ठाकरे जी की हिंदुत्व की बात है और इस राज्य के विकास की बात है। इसे हम एजेंडा ये आगे लेके जा रहे थे और आज मैं धन्यवाद दूंगा। देवेंद्र जी ने अभी यहाँ पर कहा कि हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक को समर्थन दे रहे हैं। ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है, ऐसा कभी कोई करता नहीं। जिसके पास 120 विधायक है, जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है। ये तो मुख्यमंत्री पद है और ये आज उन्होंने शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के सैनिक को एक सपोर्ट किया है। इसलिए मैं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार मानता हूँ। वैसे ही मैं गृह मंत्री अमित जी शाह साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं, उनका भी धन्यवाद। और खास करके मैं देवेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो खुद भी इस पद को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा है मैं भले मंत्रिमंडल में नहीं, लेकिन मैं इस राज्य के विकास के लिए सरकार के साथ हूँ। ऐसा जो इस राज्य में नहीं बल्कि देश में ऐसी मिसाल एक मिसाल होगी और आज के जमाने में ऐसा करना मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कर सकता है। और इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनके सभी सहयोगी जो है उनको भी धन्यवाद देता हूँ। इतना ही मैं कहूँगा, जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो 50 विधायक है उनके ऊपर जताया है, आदरणीय पंतप्रधान महोदय जी ने, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय जी ने, भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष, उन्होंने जो विश्वास जताया है उसको निश्चित रूप से हम लोग सार्थ करने की कोशिश करेंगे। और जो 40 और 10-50 विधायक जो है उनके बलबूते पर ये हम लोग यहाँ तक लड़ाई लड़ी है, एक वैचारिक लड़ाई है। और उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि एक तरफ पूरी सत्ता है, एक तरफ पूरी सरकार है, एक तरफ बड़े बड़े नेता है। मैं तो उनके सामने एक छोटा कार्यकर्ता के रूप में मैं अपने आप को समझता हूँ, लेकिन 50 लोगों ने मुझ पर जो विश्वास और जो भरोसा जताया है उसे कभी भी मैं बिल्कुल तोड़ूंगा नहीं, उस पर खरोच भी नहीं मैं आने दूंगा। और उनको पहले जो अनुभव आया है पिछले 2.5 साल में, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसकी भी मैं पूरी तरह खबरदारी लूंगा। इतना ही मैं कहूंगा। और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना है विकास के लिए हम सब, आप लेकिन हमारे साथ रहिए। सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्या माध्यमातून मी आमच्या तमाम कार्यकर्त्यांना विनंती करणार आहे, पाऊस खूप आहे, मांडव टाकलेला नाहीये, कोणाला निमंत्रण जाऊ शकत नाहीये, त्यामुळे छोटा शपथविधी सोहळा होत असल्यामुळे
सगळ्या कार्यकर्त्यांची मी माफी देखील मागतो. भाजपचे असतील, एकनाथजींसोबत असलेले शिवसेनेचे असतील, की कोणालाही प्रवेश या ठिकाणी मिळणार नाही. त्यामुळे कोणी इथे येण्याचा प्रयत्न करू नये असंही मी आपल्या माध्यमातून त्या सगळ्यांना विनंती करतो. Well, if you thought that there would be no further spins left as far as Maharashtra politics are concerned, you got it all wrong. Because what we've seen in the last half an hour, 40 minutes, is the biggest spin of them all. Eknath Shinde is going to be Chief Minister, not Devendra Fadnavis. In fact, Devendra Fadnavis announced this, but not before half of his press conference was over. It wasn't in the beginning at all. It wasn't an announcement that, you know, the gentleman sitting next to me is going to be the next Chief Minister. He built up a certain line. He spoke at length about how he had been denied in the past. And then the bombshell halfway through that press conference where Eknath Shinde is going to be the Chief Minister. Now, what did Devendra Fadnavis said? He said, we as in the BJP had the numbers earlier. This was of course talking about a few years back, but we were denied. Balasaheb Thackeray fought against the Congress. These people, in other words, the Uddhav Thackeray camp, went with the Congress. But despite fighting against the Congress, these people went with the Congress party. That is unacceptable, is what he said. There was no development under the existing government. This was a corrupt government. They had equations with Dawood Ibrahim. Two of their MLAs were in jail as well. And then all of a sudden, this big surprise where he said, and let me just go through the main points that he said over here. Eknath Shinde has given the governor his claim to be Chief Minister. We have fully supported him. With the support of independents and others, we submitted our letter. At 7:30 p.m., he will be sworn in. Eknath Shinde will be the only one sworn in. The cabinet will subsequently be expanded. I fully support this government, but remain outside the government itself. So that's yet another googly over there. Devendra Fadnavis saying that Eknath Shinde will be Chief Minister, but also saying that he himself is going to be outside the government. This is a battle which is not just about getting the BJP back in power in Maharashtra, albeit with Eknath Shinde as Chief Minister. It is destroying the political legacy of the Thackerays completely, and thereby categorically stating, and this is going to be fought legally, I suspect, that there is only one Shiv Sena, and that Shiv Sena essentially belongs to Eknath Shinde. This leaves this leaves Uddhav Thackeray very much out in the cold right now. But let's listen in to what Devendra Fadnavis had to say a few moments back. Let's listen in. भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय केला की आम्ही सत्तेच्या पाठीमागे नाही आहोत. कुठल्या तरी मुख्यमंत्री पदाकरता आम्ही चालत काम करत नाही आहोत. ही तत्वांची लढाई आहे, ही हिंदुत्वाची लढाई आहे, ही विचारांची लढाई आहे. आणि म्हणून भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय केला की श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील. All right, Sanket Upadhyay joining me for the very latest on this. Sanket, I don't think anybody had expected this. I think, and certainly Uddhav Thackeray hadn't expected it. When on the 23rd of this month, he actually said, will these people be willing to have a BJP chief minister? The answer is no, they aren't. They'll have their own chief minister. Yes. Now, who would have expected that? Absolutely, absolutely. Vishnu, who's your favorite spin bowler? Well, I think left arm spin, a Chinaman at this stage. You know, not conventional, very unorthodox. I think that's what this decision is. Exactly. So this is spin bowling at its best. I mean, the sort that we saw in some stellar matches, Shane Warne spins that would come suddenly from the leg side, and there will be a
wicket taken. I think this is pretty much that. And the attempt that has been made, and I refuse to believe that this is a last-minute decision. It was a decision that has been taken by the BJP, only revealed so last-minute and kept so secret that nobody knew. Yeah. The best and the brightest of the spin doctors, outside, inside, studio, non-studio, of all kinds, were unaware that even this can be managed. Now, many things have been achieved by this action. Right. Number one, the stature of Mr. Devendra Fadnavis has been instantly elevated. Of course, he does not remain a chief minister. He will not be a chief minister. But now he is something more than a chief minister. In Maharashtra politics, he has become a super chief minister. Remote control? Yeah, remote control. Remote control. Exactly. So 4 or 5 things that, Vishnu, that need to be spoken about here. How do you analyze this spin? So number one, and we've been seeing attempts being made continuously for the past 1 day at least, we can see that very obviously, and for the past 7-8 days continuously. An attempt to appropriate the Shiv Sena. Right. So the attempt is to basically say that the BJP has allied with the Shiv Sena. Yeah. And who is the Shiv Sena? It is Eknath Shinde's Sena and not Uddhav Thackeray's Sena. That is point number one. Right. Point number two, this is also an exercise to basically finish Mr. Uddhav Thackeray politically. How are they doing it? All symbolism, all acts of appropriation, from going to Shivaji Park, paying the respects to that eternal flame where Balasaheb Thackeray was cremated, to all symbolism that we are the real Shiv Sena, our name is, our legacy will be around Bal Thackeray, right. And at the same time basically elevating him. Third and a most important point, you see, how do you elevate someone or basically eliminate someone politically? Number one, by appropriating the legacy. Number two, by giving another person equal or more power and then facilitate and back that person. You see, what was the fear? That Eknath Shinde will face trouble. How will he face the Shiv Sainiks? How will he go back to his constituents and say that you sold us out for the sake of elevating someone else? Well, he elevated himself. Right. He elevated the Shiv Sena. Now, whenever there is an organization that will be built, it will be built around Mr. Shinde. He has been empowered. Let me ask you this. I think what is absolutely fascinating was when Devendra Fadnavis said that he's not going to be a part of the government. He will obviously support it, but he will support it from outside. In fact, Shinde said in the press conference, Fadnavis could have been chief minister, but he said he wanted to work for Vikas. This is interesting. So, Devendra Fadnavis not claiming the chief minister's post. What is the benefit to the BJP to have him working from the outside? So here is the benefit. In one stroke, Mr. Devendra Fadnavis, as we discussed, has been elevated from being a king to a kingmaker. Right. And number two, let's quickly look at the equations. In the Maharashtra Vikas Aghadi, what was happening? There was an Uddhav Thackeray, and then there was this personality called Mr. Sharad Pawar. That was the power dynamic. Now Shinde is the Thackeray and Fadnavis is the Pawar in this new equation. Right. So I'll find it very difficult to believe that Mr. Shinde will be a man of his own. He will decide whatever he has to. Mr. Fadnavis will be relegated to the margins in Maharashtra. That is not going to happen. Remember, even now, and the story is in the numbers. The story is always in the numbers, whether it is Bihar or whether it is Maharashtra. The Bharatiya Janata Party is the bigger player as far as the numbers are concerned. It is the might of those numbers that are going to dictate what is going to happen in the government. Whoever be at the head, that does not matter. Sanket, let me also tell you another stark contrast. Uddhav Thackeray, when he stepped down, said that he thanks Sharad Pawar and he thanks Sonia Gandhi. Yeah. Shinde just thanked Modi, Shah and Fadnavis. Correct. Same. The same dynamics, different people. Yeah, same dynamics, exactly. Same dynamics, different people. And one another important point before we go to Saurabh Gupta and Arvind Gunasekar, to be able to I'm sure they're also recovering from this I'm told Arvind is on television but has no answers at this stage to anything. The one important point, Vishnu, that needs to be mentioned over here. How do you arm Mr. Shinde?
So when you create him and give him this big position, not deputy CM, nothing, that big bulky position of being the chief minister, you make him responsible for the state, number one. So if there is, number one, any failing, it is Mr. Shinde's failing and not BJP's, number one. Number two, you prepare this faction for the big Mumbai contest, which is called the BMC elections. And that's when? That is going to happen at the end of this year. So you have armed a personality to build an organization to take on the mighty Thackerays. Okay, I just want to ask Arvind a question now. So Arvind, anti-defection, is this the way in which that has been averted? That essentially the Shiv Sena remains in power. What's changed? Okay, there's a new chief minister, right? So there, where is the question of anti-defection? Yeah, Vishnu, you come up with any permutation combination, even legally also, not just politically, even legally, BJP is outsmarting everything. First, Uddhav Thackeray faction, they wanted to threaten all these MLAs by moving a disqualification plea, but BJP, with the help of independents and also the rebel MLAs, they checkmated it by moving a no confidence motion against the deputy speaker. Now, when Shiv Sena faction, Uddhav Thackeray faction was hoping that unless until there is a merger, they still have the room for disqualifying all these rebel MLAs. But now, again, BJP has outsmarted them by making Eknath Shinde himself as the chief minister of Maharashtra. So, Eknath Shinde remains the leader of Shiv Sena legislature party. So now BJP will say that he has not supported BJP. He is still the Shiv Sena MLA. He is still the Shiv Sena legislature party leader. It is BJP which has supported Eknath Shinde to become the chief minister. So the entire disqualification, the ground or the leg for the disqualification proceedings is no more there, because he still remains as the legislature party leader of Shiv Sena. So you cannot initiate a disqualification proceedings against him, because the moment the speaker comes, speaker will recognize him as the leader of legislature party. So he still remains as the Shiv Sena MLA, and there cannot be any disqualification proceedings against him. But again, with the way they are moving, because this is also a political move, not just a legal move, so they want to send Uddhav Thackeray to political oblivion. So it looks so they won't stop here just now. They will also be moving the election commission to stake claim for the entire party per se. For that, next Eknath Shinde will be calling the General Council or the National Executive of Shiv Sena, wherein he would get the support of the majority of his bearers, and then let's not be surprised if he unseats Uddhav Thackeray as the chief of Shiv Sena party itself. So for that, we have to wait for the entire swearing-in ceremony to be over, and then the next kind of political move. I just wanted to ask Saurabh, before we go back to Sanket, what happens to those MLAs and supporters of Uddhav Thackeray even now? In a situation like this, is there a possibility that they may defect as well? Well, Vishnu, I think, yes, that's a valid question, but there's another question that at this point comes to mind. Aditya Thackeray is also an MLA, and, he's a Thackeray, and all this while the equation has been that Eknath Shinde as number 2 was promoted, and Aditya Thackeray was seen as the superpower in the party. Right. What happens to that equation? That's very important. Secondly, the other thing is, like I've been saying, Vishnu, this is a very well thought out strategy on part of the BJP. Like Arvind was saying, it's outsmarting everyone. If you remember earlier in the day, I was talking about how accommodative the BJP is going to be. But even me, in my wildest imagination, did not imagine that they were going to be this accommodative. But why are they being accommodative now? They're looking at the future. And what is the future? Hindutva politics. In Hindutva politics, if you leave a powerful Thackeray in charge, then you are sharing the Hindutva space with someone else. Vis-a-vis, if you cut Uddhav Thackeray into political oblivion, and if you can restrict Aditya Thackeray as well, then you have Eknath Shinde, who's completely dependent on the BJP, who's not going to be independent, but he's also going to have a Shiv Sena which will be completely subservient to the BJP. That's the game. Because remember, an independent Shiv Sena could have led to, Devendra Fadnavis losing his seat and the BJP losing chief ministership of a state like Maharashtra. So yes, the BJP is killing not 2 birds with one stone, but multiple birds with one stone. That is the strategy here. Also, there is a lot of internal dynamics within the BJP, and we're not talking about that. But there are internal dynamics at play here. Fadnavis is someone who has bigger aspirations. Being chief minister of Maharashtra is not his end game, is not his own end goal. His goal is to be larger in terms of national politics.
Now, if he were to become chief minister again, it would mean that yes, he got people to defect and became chief minister again. With this move, he's also laying the platform for a bigger move. Right. And also, what like Sanket was saying, you know, the remote control is now in the hands of Devendra Fadnavis, no longer in the hands of, like, you know, it used to be in Balasaheb Thackeray's time, right, in the hands of Balasaheb Thackeray. So this is a very, very smart political move. At the moment, it might seem like a Shiv Sainik is becoming chief minister and it's all great, Shiv Sainiks are happy, but at the end of the day, what Sanket was talking about was very important. Organization. That was firmly with Uddhav Thackeray. Uddhav Thackeray was getting a lot of sympathy. You know, the organization, this move will cut some of that, because at the end of the day, the BJP is going to say, look, we made a Shiv Sainik a chief minister. No, that's an important point. This is a move that out. In fact, I just wanted to ask Sanket that I think Saurabh makes an important point. There has been a groundswell in the last couple of days for Uddhav Thackeray. There were lots of Shiv Sainiks from Aurangabad to Mumbai who actually came out, started crying, and even today there were protests in favor. So this, I mean, how would the Shiv Sainiks on the ground, the party workers, actually see this? I don't know. Confused. Will need some time to perhaps be able to register what has happened and then figure out. You see, many people call power poison, but power is a great political glue also. Yeah. So in such a scenario, will you have many more people from the Uddhav Thackeray faction of the Shiv Sena, not just the MLAs, but the Shakha Pramukhs? You see, it was a very cadre-based party. BJP and the Shiv Sena operate in a very identical way. So you've got like a proper organogram, right, which functions, which is why rebellion was unheard of. And because the rebellion happened, now the BJP's strategy could be to basically take this to its logical conclusion and establish a more subservient, as Saurabh was saying, a more subservient version of Uddhav Thackeray's Shiv Sena. Right. Will they succeed? Because do remember, the name Thackeray is still with Uddhav and Aditya. And will that ring a bell emotionally with the people, or are the emotions that people have with the Shiv Sena over with Balasaheb Thackeray? You know, Sanket, when Aditya spoke to us a little while back, Aditya Thackeray, he said that Eknath Shinde was hungry for power. In fact, Eknath Shinde is perhaps even more hungry for power, because Shinde would know that he is not really in charge. But yet he chose to accept this and become chief minister. You know, it'll be interesting to find out at what stage this did Mr. Shinde know that he will be made chief minister. Today itself? Who knows? Who knows the way this has happened? I think Saurabh has an answer to that. Yeah, we'll go back to Saurabh in just a short moment. Joining us right now is Mr. Eknath Shinde. He is an MLC and an NCP leader, but Mr. Shinde was very closely affiliated with the Bharatiya Janata Party. Mr. Shinde, good evening. How are you? Good evening. How do you look at these developments, Mr. Shinde? Was this a surprise? Do you think this works? Will the BJP succeed in a strategy? You look at this as a master stroke? देखिए, कोई मास्टर स्ट्रोक का सवाल नहीं है. कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए रिस्क नहीं लेना चाहते. देवेंद्र जी वैसे पहले से बोल रहे थे कि मैं फिर से आऊंगा. जब अभी ये जो समय आया है तो फिर से क्यों नहीं आए? अभी उनको डर लग रहा है कि आगे कोर्ट के निर्णय क्या हो सकते हैं. अभी 11 तारीख को तो इसके सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आने वाला है कि ये क्वालिफाइड है या डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं. दूसरी बात ये है कि शिवसेना का एक है गुट जो बाहर पड़ा है, पर शिवसेना एक काडर बेस्ड पार्टी है और पूरे शिवसेना का जो नेशनल पार्टी का मीटिंग हुआ उसमें सारा जो विश्वास दिखाया है वो उद्धव ठाकरे जी के ऊपर दिखाया है. और इसमें शिवसेना में स्प्लिट, अगर शिवसेना में कोई गुट नेता करना है तो उद्धव ठाकरे को कानूनन अधिकार है, जो अपने कानून में लिखा है कि जो पार्टी का लीडर है वही अपना गट का नेता चुन सकता है. अभी एकनाथ शिंदे जो है वो स्वयं घोषित नेता है. देवेंद्र जी को यह डर भी हो सकता है कि अगर कल एकनाथ शिंदे डिस्क्वालीफाई हो गया तो सरकार भी गिर सकती थी. इसलिए देवेंद्र जी अपनी जिम्मेदारी टाल के दूसरे के ऊपर डालना चाहते हैं. आगे चल के ये दिख रहा है कि भाई मैं खुद सरकार चलाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी सरकार चलाने के, ऐसा बोलते हैं.
और एकनाथ शिंदे फिर ऐसा है कि रबर स्टैम्प जैसा काम करेगा। और उसके बाद मैं ऐसा लगता हूँ कि पूरी राजनीति जो 8-10 दिन में चल रही है महाराष्ट्र में, ऐसी राजनीति या महाराष्ट्र की जनता ने कभी अनुभव इसका नहीं किया था। और अभी देवेंद्र जी ने, आप बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक, मेरी ओर से तो ऐसा लग रहा था पहले से ही कि भाई देवेंद्र जी खुद होंगे या बीजेपी के दूसरे लीडर को करेंगे। पर अभी ठीक है, एकनाथ शिंदे जी शपथ ले रहे हैं, आगे चलते हैं कि क्या देखते हैं। कोर्ट के निर्णय भी आना बाकी है, पर फिर भी एक बार एक देखिए कि अगर नहीं, खड़से जी आपका ये कहना है कि ये जिम्मेदारी से बचने का एक प्रयास है, ही इज एस्केपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। या मुझे ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टालने का विषय है, क्योंकि इसमें रिस्क है और रिस्क देवेंद्र जी लेना नहीं चाहते। अगर देवेंद्र जी मुख्यमंत्री होते भी है और कल कोर्ट ने रिस्क क्या है, रिस्क अगर आप बता सकें, आपको क्या लगता है रिस्क क्या है? कोर्ट का निर्णय या सरकार चलाना? देखिए कि पहले अटल जी के कार्यकाल में हमने देखा कि एक वोट से सरकार गिर गई थी, 13 दिन की सरकार गिर गई। और उसके बाद सरकार के लिए जब कोई विषय आता है तो देवेंद्र जी को ये डर लग रहा है कि अगर मैं खुद मुख्यमंत्री हुआ और 8 दिन के अंदर ये डिस्क्वालीफाई हुए तो मैं अभी ये नामुमकिन टालने के लिए उन्होंने कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए या कुछ साल के लिए एकनाथ शिंदे को आगे किया है। ये भी एक बात हो सकती है कि भाई एकनाथ शिंदे को आगे चल के हम लोग सरकार चलाएंगे। ऐसा होता है कि अभी तक देवेंद्र जी ने ये बताया नहीं है कि हम सरकार में जाएंगे या सरकार को बाहर से हम समर्थन करेंगे। ये बात अभी तक क्लियर हुई नहीं है। अगर वो बाहर से समर्थन करते हैं तो कभी सरकार गिर सकती है। सरकार के अंदर जाते हैं तो कोर्ट के निर्णय के अधीन ये कितने दिन तक रह सकते हैं पता नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा लंबा बंदोबस्त नहीं है, मतलब ऐसी योजना नहीं है कि बहुत बहुत लंबे समय तक सरकार चले। इसमें बीजेपी ने अपना वो एस्केप सेफ्टी वॉल्व बना करके रखा है। सरकार चले कितने दिन ये मैं बता नहीं सकता, पर ये मुझे मालूम है कि बीजेपी गवर्नमेंट या जो बीजेपी के आला नेता जो ऊपर बैठे हैं वो दूसरे सीएम को मान्यता नहीं देंगे। अभी जो दिया है वो समय पर थोड़े समय के लिए दिया है। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? बीजेपी के नेता महाराष्ट्र में ऐसा है कि मोदी जी, नड्डा जी है, जो भी है, तो ये जो एकनाथ शिंदे है उनको 2 साल 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं हो सकते। बीच में एकनाथ शिंदे को जरा के देवेंद्र फडणवीस को ही इनको बनाना पड़ेगा। आगे चल के 2 साल बाद 2.5 साल बाद महाराष्ट्र के इलेक्शन है। अगर इलेक्शन को सामने जाना है तो एकनाथ शिंदे को सामने करके ये इलेक्शन लड़ नहीं सकते, बीजेपी नहीं लड़ सकती। इसलिए आगे की राजनीति मुझे ऐसी लगती है कि कुछ समय के लिए एकनाथ शिंदे को ये देगा वादा, बाद में फिर से बीजेपी ही आएगी, ऐसा मुझे लगता है। और एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे अपने आप को किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि ये अगर एक ख्वाहिश है यहाँ पर, एक प्रयास है यहाँ पर कि उद्धव ठाकरे के जो गुट है उसको धीरे धीरे छोटा कर दें, खत्म कर दें, आपको लगता है वो रणनीति काम आ सकती है या उद्धव ठाकरे अभी भी प्रमुख रहेंगे शिवसेना में? मुझे नहीं लगता ये रणनीति काम आएगी। एक तो पहली बात है, कोई 2/3 विधायक चले जाने के साथ कोई पार्टी तो नहीं चली गई। जहां तक अभी परसों के दिन जो मीटिंग हुई शिवसेना की, तो उन्होंने जो निचले स्तर तक जो शाखा प्रमुख थे वो शाखा प्रमुख से लेकर तो वरिष्ठ नेताओं तक उन्होंने उद्धव ठाकरे को समर्थन दिया है। पार्टी अलग बात है और असेंबली का गठ जो है, ग्रुप है, वो अलग बात है। पार्टी आखिर इलेक्शन कमीशन के पास क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन हुआ है, पार्टी के पास धनुष्यबाण उनका चिन्ह है। एकनाथ शिंदे ने कुछ भी किया तो वो चिन्ह उनको नहीं मिल सकता। एक तो बात, पहली बात है कि इनको शिवसेना बोलते हैं एकनाथ शिंदे, पर ये शिवसेना में नहीं रह सकते। 10 शेड्यूल के अनुसार इनको कहीं तो भी विलीन होना पड़ेगा। एक तो इनका पूरा का पूरा गुट जो है बीजेपी में जाना पड़ेगा या कोई और पार्टी में जाना पड़ेगा। ये हो ही नहीं सकता कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना अलग हो सकती है और उनको जो उनका धनुष्यबाण चिन्ह है वो मिल सकता। जहां तक मेरा अभ्यास है, मैं 40 साल से राजनीति में हूँ, 40 साल से विधायक भी था, अब एमएलसी भी बना हूँ, मंत्री भी रह चुका हूँ, विरोधी पक्ष नेता भी गुट भी था, बहुत सारे अनुभव मेरे पास है। तो मेरा जो आज का स्टडी लग रहा है
तो मुझे नहीं लगता है कि एकनाथ शिंदे को शिवसेना करके मान्यता मिलेगी। एकनाथ खड़से जी, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। All right, let's stop for a short break at this moment. News and updates continue on the other side.